Hello student, today we will study the last lesson by Alphonse Daudet. We studied the first part of the lesson. Now we will study the remaining part of this chapter. So first I would like to give you some review of the first part. हमने first part में क्या पढ़ा था? In this lesson there is a boy Franz who is a writer. One day when he went to the school, actually he did not want to go to the school because he did not know anything about participles. फ्रेंच लैंग्वेज के पार्टिसिपल उसको नहीं आते थे एंड दैट इज़ वाई ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल बट येस ही वेंट, लेकिन वो फिर भी जाता है. ड्यूरिंग दिस टाइम देर वॉज अ प्रूशियन एंड फ्रांस वॉर, और वहाँ पर वो बुलेटिन बोर्ड देखता है जहाँ से बैड न्यूज़ आते हैं. बट ही डिड नॉट गो देयर, he went to the school directly and here he found something strange. क्या strange देखता है? The school was as silent as Sunday morning. Sunday morning की तरह वो स्कूल एकदम शांत थी. There was no any kind of sound of the bench opening and closing the bench and reciting the chapter of the student. Nothing. He heard nothing. So it was quite strange for him, and there was more strange for him when he entered into the classroom. He was afraid of scolding from Mr. Hamel. उसको डर लगता था कि वो Mr. Hamel आज उसको डांटेंगे for being late for the school. But he went to the classroom. He entered into the classroom. Mr. Hamel did not scold him, and Mr. Hamel told him to take his place. And on that day he talked to friends very politely, kindly. And here he saw that here writer जो है friends जो है वो देखते हैं कि Mr. Hamel was in a beautiful cloth. He was in good attire. वो बहुत अच्छे कपड़ों में आए थे. Generally he used to come to school in beautiful attire on inspection day and on the day of जब कभी इंस्पेक्शन होता है और कभी विनर या फिर कुछ ऐसा कुछ ओकेज़न होता है तभी वो ऐसे कपड़ों में आते थे. बट ऑन दैट डे ही ऑल्सो सीन दैट कि कुछ विलेजर्स है वो बैक बेंचेस पर बैठे थे. दे वर स्टडिंग लाइक द अदर स्टूडेंट. जो विलेजर्स है उसमें मेयर थे, पोस्ट मास्टर थे, वो बैठे थे. तो थोड़ा उसको अजीब लगता है किसको? फ्रेंड्स को. बट when Mr. Hamel told friends that it was his last lesson, ये उसका लास्ट लेसन है और वो लास्ट डे है फ्रेंच पढ़ने का. एट दैट टाइम ही अंडरस्टूड दैट कि वाई विलेजर्स वर सिटिंग देयर एंड वाई मिस्टर हेमल केम टू स्कूल इन अ ब्यूटिफुल अटायर. वो अच्छे कपड़ों में क्यों आए हैं. एंड हियर ही ऑल्सो फाउंड दैट, उसने ये भी देखा कि विलेजर्स है वो आज फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने के लिए आए हैं. वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हो, बहुत अपसेट है और सॉरी फील कर रहे हैं कि उसने कभी फ्रेंच लैंग्वेज कभी पढ़ी नहीं. और मिस्टर हेमल भी बहुत दुखी है कि बच्चों ने कभी ध्यान दिया नहीं. सो यहाँ तक हमने पढ़ा था. नाउ पार्ट 2. अब हम आज पार्ट 2 पढ़ेंगे. पार्ट 2 में आज हम लाइन टू लाइन और पैराग्राफ टू पैराग्राफ वी विल स्टडी दिस चैप्टर. Page number 5, first paragraph. While I was thinking of all, I was turned to recite. It was his time to recite the participles. Here, Mr. Hamel called French to recite the participle. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. And here he has to speak in loud and clear voice without any mistake. What he has to speak? He has to speak the dreadful rule of the participle. And here he could not muster the courage. वो हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पाता और वो डर रहा है क्या वो ऐसा कर सकेगा. बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. बट हियर फ्रेंड्स कुड नॉट स्पीक. ही मिक्स अप एवरीथिंग एंड ही स्टूड देयर holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. And here he stood there. He did not speak anything. He just holding his desk and
This time his heart was beating very fast and not daring to look up, and here he felt shame. He regret that he did not able to speak anything, so he did not look up. वो मिस्टर हेमल को देखते नहीं. जनरली ऐसा ही होता है क्लासरूम में. when the students are not able to answer, they do not have dare to look to the teacher. I heard Mr. Hemel say to me, I will not scold you, little friends. उसने कहा, I will not scold you, मैं तुझे डांटूंगा नहीं. Little friends, you must feel bad enough. तुझे यहाँ पर bad feel होना चाहिए, because French was his mother tongue. हम उसकी मातृभाषा है और उसके बारे में उसको कुछ भी आता नहीं है. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. And every time, sometimes, not sometime, but most of the time, we think that we will do it. We will do the work tomorrow or next day. When the next day come, we put the things on another day. कि हर बार यही होता है कि हम ये काम जो है दूसरे दिन पर छोड़ देते हैं, फिर दूसरा दिन आता है, we put on another day. So here Mr. Hemel said that, and here friends thinks that कि उसके पास plenty of time था. He had plenty of time, but every time he puts the things on another day. And where we has, कहाँ पर है वो अब? He did not know anything. कुछ भी उसको आता नहीं था. How is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? He asked. कहाँ पर है? Why we are pretending? हम क्यों ढोंग कर रहे? Pretend means ढोंग करना, false showing. हाँ, mother tongue is there. Mother tongue, and how can we say that we are Frenchmen? हम हमारे आप को कैसे कह सकते हैं कि हम Frenchman हैं? Because the people did not know the language, neither they write nor to speak very well. Mr. Hemel said that, but you are not the worst poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. Means here, Mr. Hemel thought that it is not the fault of friends, but here he said that we have all great deal to reproach ourselves with. It means that हमने ही हमारे साथ ऐसी डील कर दी है जो हमें ही, रिप्रोच मीन्स टू फील शाय, हमको शर्म आती है हमारे साथ, हमने ही ऐसी डील की है. कैसी डील? बिकॉज पीपल नेवर गिव अटेंशन टू देयर मदर टंग. योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, एंड हियर पेरेंट्स डिड नॉट गिव अटेंशन टू देयर children. They prefer to put you to work on farm or at the mills, because their parents provided them work where it is in farm or maybe in the mills, so as to have a little more money. Parents send their children to work on farm or in a mill to earn little money. पेरेंट्स का भी दोष है, क्योंकि वो पैसे के लालच में अपने बच्चों को काम के लिए भेजते थे. They send their children on work, but they never pay attention in their study. And here Mr. Hemel also feels regret for himself. अपने आप पर भी शर्म करते हैं. I have sent you to water my flowers instead of learning your lessons. Sometimes he sent their children to give the water to his plants in garden. कभी कभी वो भी अपने बच्चों को, स्टूडेंट को भेज देते थे गार्डन में पानी देने के लिए. And when I wanted to go fishing, did not just give you a holiday. Here he felt regret. क्या मैंने भी कभी आपको हॉलीडे नहीं दे दिया था? Because he wanted to go on fishing. कभी फिशिंग के लिए जाना होता था. He also sent the children on holidays. बच्चों को भेज दिया हॉलीडे पर. So he felt regret for that. पेरेंट्स के लिए भी रिग्रेट और अपने आप के लिए भी रिग्रेट फील करते हैं. Then from one thing to another, Mr. Hemel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. Then one thing to another, he said about the French language. एक बात से लेकर दूसरी बात को वो बताते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में. Student, here a map is given in your textbook. This is the map of France and nearby the Europe countries.
And here Mr. Hemmel said that French language is the most beautiful language in the world, the clearest one. It is so clear like a water, the most logical. That language is also a logical one, that we must guard it among us. And he said that it is their duty to save, to give the protect to their language and never forget it. He said that to never forget the language, mother tongue. बिकॉज वेन पीपल आर एनस्लेव, जब पीपल एनस्लेव होते हैं, गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. एंड हियर ही सेड दैट व्हेन द पीपल बिकम एनस्लेव, जब वो गुलाम बनते हैं, ओनली द की फॉर देयर प्रोटेक्शन इज द लैंग्वेज. उसकी लैंग्वेज उसको बचाए रखती है. इट मीन्स इट इज़ नॉट हियर टू क्री टू प्रिजन. प्रिजन मीन्स उसको जब कैद बन जाते, जब गुलाम बन जाते, तब वो लैंग्वेज उसको बचाती है. प्रिजन इट मीन्स नॉट दैट कि यहाँ पर जेल में भेज दिया. इट मीन्स दैट व्हेन द पीपल आर प्रिजन्ड, जब उसको कैद किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है गुलामी की कैद में, तब ओनली द सेफ गार्ड इज ओनली द लैंग्वेज. Then he opened a grammar and read us our lesson. Then here Mr. Hemmel started his lesson of grammar. Which language? Obviously French language. I was amazed to see how well I understood it. And here French felt amazed. He understood everything because he never paid attention before that. All he said seemed so easy. Whatever Mr. Hemmel taught, it was easy for French. He understood everything. So easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. And here Mr. Hemmel also teaching with lots of patience. धैर्य के साथ सिखा रहे थे. Sometimes you know what happen when the students are not paying attention, teacher loses the patience. कभी कभी patience खो देते. But here Mr. Hemmel was teaching with lots of patience and everything understood by friends. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. And here he also realized that Mr. Hemmel wanted to give everything whatever in his mind. जो भी है दिमाग में वो दे देना चाहते with the first stroke, कि आज ही सब कुछ दे दे. नॉलेज, जितना भी नॉलेज भरा है, whatever the knowledge he had, he wanted to give all the knowledge with one stroke to the student and the people who were sitting there. After the grammar, we had a lesson in writing. As the grammar topic finished, now it was writing session time. That day, Mr. Hemmel had new copies for us, and also Mr. Hemmel brought some news copies for the student and for the villagers. New copies लेकर आए थे बच्चों के लिए और villagers के लिए. Written in a beautiful round hand, France, Alsace, France. और वहाँ पर लिखा था France, Alsace, France, Alsace. France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flakes floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. ऐसा लगता था जैसे कि वो. Here he felt that the words are like flakes floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of their desk. You ought to have seen how everyone set to work. Everybody were doing their work, and how quiet it was. People were doing their work, students were doing their work, and it was so quiet. The only sound was the scratching of the pens over the paper. And here they only heard the sound of pens and scratching pens over the paper. Once some beetles flew in. कुछ beetles से वहाँ पर flew in मतलब उड़ती हुई आती है. But nobody paid any attention to them. But here the student and the people who were sitting there, they did not give any attention to the beetles. Not even the littlest one. ना तो littlest one ने वहाँ पर attention दिया. Who worked right on the tracing their fish hook as if that was
French. 2. On the roof, the pigeons cooed very low, and here he also heard some pigeons were chirping and cooed. So here birds were chirping, pigeons cooed very low, and I thought to myself, here friends thought, will they make them sing in German, even the pigeons? Here he thought, there will be rule of German from the next day. So here he thought, क्या जर्मन लोग इससे भी क्या जर्मनी में सिंग करवाएंगे? Here he thought about the people and about the nature, कि लोग इंसानों पर कंट्रोल तो कर सकते हैं, इंसानों पर कैन दे कंट्रोल ऑन द pigeons on nature, कि क्या उनसे भी वो जर्मनी में सिंग करवाएंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. And here, when friends looked up, जब भी वो देखते थे, whenever he looked up, he found Mr. Hamill sitting on chair motionless and he just fixing one thing to another, जैसे वो अपने आँखों में दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे क्या, every corner of the school room in his mind that can never be erased from the mind, इतना फिक्स कर लेना चाहते थे ये स्कूल कि अपने दिमाग से कभी वो इरेज ना हो. Fancy means imagination. For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his classroom in front of him. With the 40 years he had been teaching there for 40 years, 40 साल से वहाँ पर पढ़ा रहे. He made his beautiful garden outside the school, वहाँ पर उसने स्कूल में बहुत बड़ा एकदम से वंडरफुल गार्डन बनाया है. And he has been there for 40 years, वहाँ से he is teaching there for 40 years. Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows of the roof. Now he is thinking about the school. वहाँ से वो 40 साल से है. द डेस्क जो है वो स्मूथ हो गए यूज़ होते होते. द वॉल ट्रीज इन द गार्डन वर टोलर, पेड़ बढ़ गए. एंड होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, होप वाइन इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट ट्री, जो बड़ा उसने किया था वो ट्वाइन अबाउट द विंडोज़, विंडोज़ बहुत बड़े हो गए और वो रूफ तक आ गए हैं. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. And here he was thinking about the school, about how to leave it, उसको वो कैसे छोड़ेंगे. And when he will leave the school, his heart will break, उसका हृदय जो है वो टूट जाएगा. जो भी चीज़ से हम अटैच हो जाते हैं, it is hard to leave it for us. हमारे लिए बहुत कठिन बन जाता है वो चीज़ को छोड़ना जिसके साथ हम अटैच हो चुके हैं. एंड हियर हर सिस्टर वॉज पैकिंग देयर ट्रंक, पीपल वर पैकिंग देयर ट्रंक. यहाँ पर है वो जो उसकी सिस्टर है वो ट्रंक मीन्स इट्स अ बिग बॉक्स, जो हम कहते हैं बड़ा सा बक्सा, वो पैक कर रहे थे बिकॉज दे आर गोइंग टू लीव दैट प्लेस. दूसरे दिन से वहाँ पर किसका होगा राज? जर्मनी का. द जर्मनी विल रूल. So that is why they decided to leave the place. But he had the courage to hear every lesson to the very last. But he had courage. Mr. Hamill had a courage to listen the every lesson because as it was his last lesson. After the writing, we had a lesson in history. Then history lesson, first of all grammar, then writing. Now it is about history lesson. And then the babies chanted their ba, baby, bo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. And here the babies chanted, वहाँ से आवाज़ भी आती है. क्या आवाज़ आती है? बा, बेबी, बो, बू. Down there at the back of the room, ओल्ड हाउज़र हैड पुट, यहाँ पर जो ओल्ड हाउज़र बैठे थे उसने
अपनी प्राइमर पर अपने 2 हाथ जोड़कर वहाँ पर बैठे एंड स्पेल्ड, उसने स्पेल्ड किया जो भी लेटर वहाँ पर थे, वट एवर द लेटर ही हैड रिटन। क्या थे लेटर? फ्रांस, अल्सास, फ्रांस, अल्सास। You could see that he too was crying. Everybody could see. वो रो रहे थे. His voice trembled with emotions and his heart was filled with the emotion, and that is why he was trembling, sucking. And it was so funny to hear him with that we all wanted to laugh and cry. यहाँ पर ऐसी स्थिति थी, यहाँ पर हंस भी सकते थे क्योंकि सिचुएशन ये ऐसी थी। कोई बड़े इंसान रोते तो थोड़ी उसको देखकर थोड़ा अमेज फील होता है, और क्राई क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी। समटाइम्स यू नो द सिचुएशन अकर्स इन अवर लाइफ, वी कैन नॉट लाफ एंड वी कैन नॉट क्राई, इवन दो वी क्राई एंड वी लाफ। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन फ्रेंड्स finds that how remember he remembers everything. That last lesson उसको सब कुछ याद रह गया. He understood everything because he paid attention. He was careful about the study. All at once the church clock struck 12. It was time of 12. The church bells rung 12. Then the angelus. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Then he listened that the Prussians soldiers were returning after their drilling, and trumpets means hunters. हंटर्स का जो ब्यूगल बजाते वो ब्यूगल बजाते बजाते वो रिटर्न हो रहे थे. दैट इज ट्रम्पेट मीन्स हंटर्स बेल. मिस्टर हेमल स्टूड अप very pale in his chair. I never saw him look so tall. कभी उसने कभी ऐसा देखा नहीं था. मैं मिस्टर हेमल यहाँ पर खड़ी हुई. वेरी पैल मीन्स उसका चेहरा बहुत ही फीका पड़ गया था, फेडेड हो गया था. माई फ्रेंड्स सेड ही मीन्स मिस्टर हेमल. मिस्टर हेमल्स थ्रोट चॉक्ड, जैसे उसका गला चौक हो गया हो. बट समथिंग चॉक्ड हिम, कि उसको किसी ने जैसे चौक हो गया गला. ही कुड नॉट गो ऑन, वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सके. ही कुड नॉट स्पीक. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. ही कुडंट स्पीक, सो ही वॉन्टेड टू शेयर हिज व्यू बाय राइटिंग, एंड दैट इज़ वाई ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. बोल नहीं पाए इसीलिए वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए. टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड. और बहुत ही भारी विथ हैवी हार्ट एज कुड एज ही राइट. बहुत भारी हृदय के साथ और बहुत बड़े अक्षरों में एज ही कुड जैसे कि उसको जितने बड़े अक्षर होते उसमें लिखा विवा ला फ्रांस. इट मीन्स दैट लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस की उम्र लंबी हो. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. Gestures मतलब इशारों की लैंग्वेज में उसने कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. आज की स्कूल पूरी होती है. यू कैन गो मीन स्टूडेंट एंड द विलेजेस कैन गो. सो हियर it was his last lesson of French. What is the moral of this chapter? And the moral that we should not forget our mother tongue. We should protect it. It is our duty to protect our mother tongue.